Question 8. F of u is equals to square root a plus u minus square root a minus u whole divided by square root a plus u. बेटा आप पहले ऐसे डिस्कशन कंप्लीट करें, करने में इंतजार करें। A plus u plus square root a minus u. डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आप लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। ज़्यादा मुनासिब होगा कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर को सिंपल बना दें, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट हम कर रहे हैं। आमतौर पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सिर्फ साइन का डिफरेंस हो तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिनोमिनेटर को सिंपल बना दिया जाता है। तो हमारे हिसाब से यहाँ सुटेबल मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही होगा। Multiply and dividing by conjugate of the denominator, which is square root of a plus u minus square root of a minus u. ये हो जाएगा square root of a plus u minus square root of a minus u divided by square root of a plus u plus square root of a minus u into square root of a plus u minus square root of a minus u divided by square root of a plus u minus square root of a minus u. दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हैं और स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट a प्लस यू माइनस रूट a माइनस यू होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी यूज कर सकते हैं। रूट a प्लस यू होल स्क्वायर माइनस रूट a माइनस यू होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं। रूट a प्लस यू होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस यू होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में रूट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। a प्लस यू माइनस a माइनस यू that is equal to a plus u minus 2 into square root of a plus u into a minus u। ये दोनों रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक ही रूट में लिखा जा सकता है। रूट स्क्वायर रूट कैंसिल a माइनस यू डिवाइडेड बाय a प्लस यू माइनस a माइनस इंटू माइनस प्लस यू। यहाँ प्लस यू कैंसिल हो गया माइनस यू से, यहाँ माइनस a कैंसिल हो गया प्लस a से। इसका मतलब अब ये बन जाएगा a प्लस a टू a माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u। आप 2 भी कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u। ये 2 कैंसिल हो गया, यू लेफ्ट a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय u। डिनोमिनेटर जितना सिंपल बन सकता था बनिए। अब क्या एज एक्सपेक्टेड पहला लेक्चर भी आपका अभी तक कंप्लीट नहीं है। यानी फर्स्ट लेक्चर में खास तौर पे कहा कि आप सम और डिफरेंस आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। कितना टॉप प्रायोरिटी पे है? डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म देख के भी आपके दिमाग में आप लॉग लेना चाहते हैं,
can be written as f of u is equal to a upon u minus square root of a square minus u square upon u. इसे लिखा जा सकता है f of u is equal to a u power minus 1 minus square root of a square minus u square upon u. आप यहाँ अब डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा सेंसिबल है तो वो इसे और सिंपल बना सकता है, तो इसे लिख सकता है रूट ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यू को जबरदस्ती रूट में ले जाए ताकि यहाँ पे भी एलसीएम ब्रेक किया जा सके। ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर यू पावर माइनस 2 माइनस 1। आपको मैं क्या कहूँ, जिसके दिमाग में ये है ही नहीं कि डिफरेंशिएट करते हुए किस चीज का सबसे पहले आप ख्याल रखें। आप गलती से भी वो काम नहीं कीजिएगा, वो आपके लिए काफी नुकसानदेह होगा, वो कर लेगा। ना करो तो अच्छा, क्योंकि माइनस पावर जान को हो जाएगी। Differentiate both the sides with respect to u. We write d upon du of f of u is equal to d upon du of a u power minus 1 minus square root of a square minus u square upon u. F prime u is equal to d upon du of a u power minus 1 minus d upon du of square root of a square minus u square upon u. Now, f prime u is equal to a into d upon du of u power minus 1. यहाँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन अप्लाई करें। U into derivative of under root a square minus u square minus a under root a square minus u square into derivative of u whole divided by u square. It is equal to u into derivative of square root of a square minus u square minus square root of a square minus u square into derivative of u whole divided by u square. Now it is equal to a multiplied by minus 1 u power minus 1 minus 1 is minus 2 minus 1 upon u square is u square के बाहर लिख दिया, u as it is, रूट को रिमूव करने पावर हाफ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और डायरेक्ट रिजल्ट बता हाफ हाफ into a square minus b square whole raised to the power minus 3 of minus half ये माइनस 3 कहाँ से आया? minus half हाफ माइनस 1 it is minus half to derivative of into derivative of what? function तो क्या है फंक्शन? a square minus b square तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? minus 2 तो माइनस 2 यू बोलो, मुझे सिखाओ नहीं, मैंने कहा ना डायरेक्ट मुझे रिजल्ट बता, सिखा तो दिया है ना। n function power n minus 1 into derivative of function, the derivative of a square minus u square is minus 2u minus square root of a square minus u square as it is derivative of u square. ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया माइनस a अपॉन u स्क्वायर minus 1 upon u square multiplied by minus into plus is minus u into u is u square upon square root of a square minus u square. शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में, पावर प्लस हाफ मीन्स स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, माइनस a अपॉन u स्क्वायर minus 1 upon u square multiplied by square root of a square minus u square is the LCM.
The root cancel, you have minus u square minus root multiplied by root square तो root cancel हो जाएगा. Now it is equal to minus a upon u square minus 1 upon u square multiplied by minus u square minus a square minus into minus plus u square divided by square root of a square minus u square. Plus u square minus u square cancel हो गया. बाकी बच जाएगा f prime u is equal to minus into minus plus a square 1 upon minus a upon u square minus into minus plus a square upon u square into the square root of a square minus u square. एलसीएम लेके मजीद सिंप्लीफाई करें. एलसीएम आ जाएगा u स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. u स्क्वायर कैंसिल, you left root into minus a into root a स्क्वायर minus u स्क्वायर plus a स्क्वायर. अरेंज कर लें. f prime u is equal to a स्क्वायर minus a into root a स्क्वायर minus u स्क्वायर divided by u square into root a square minus u square. ये हो गई मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. आप लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करके ये रिजल्ट आने की कोशिश करें. आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी ये रिजल्ट आने की कोशिश करें. अगर इससे ज्यादा क्विकली कर ले तो हमें कोई इशू नहीं. और भी कुछ फाइंड करना था इसमें. F prime half. Now replace u by half a. Replace u by half a. F prime half a is equal to a square minus a into root a square minus half a whole square divided by half a whole square into square root of a square minus half a whole square. It is equal to a square minus a into root a square minus a square upon 4 divided by a square upon 4 into the square root of a square minus a square upon 4. ये हो जाएगा a square minus a into 4 is the LCM. 4a square minus a square, it is 3a square upon 4 divided by a square upon 4 into the square root of 3a square upon 4. ये हो जाएगा a square minus a into square root 3a upon 2. 3 रूट से बाहर नहीं निकल सकता. a square भी और 4 भी रूट से बाहर नहीं. a square upon 4 multiplied by square root 3a divided by 2. आप इसे लिख सकते हैं a square multiplied by 1 minus square root 3 upon 2. इन दोनों में से a square आपने कॉमन लिया. a square upon 4 multiplied by square root 3a upon 2. ये a square तो हो गया कैंसिल. बाकी बच गया 1 minus square root 3 upon 2 multiplied by 8 upon square root 3a. 4 into 2 8. शिफ्ट कर दें मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में. ये हो जाएगा 2 minus square root 3 divided by 2 multiplied by 8 upon square root 3a. ये हो जाएगा 4 into 2 minus square root 3 divided by square root 3a. आप यहाँ छोड़ सकते हैं. आप चाहें तो रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें. तो 4 into 2 minus root 3 divided by root 3a into root 3 divided by root 3. तो
it becomes 4 into 2 root 3 minus 3 divided by 3a. Root 3 into 2 to root 3 into root 3 it is 3, root into root cancel it is 3. हमारे ख्याल में ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये जो तीन सवालात हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था शायद कि इन तीन क्वेश्चंस में से तकरीबन हर साल एक आध क्वेश्चन आ जाता है। अब पढ़े क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 हम करा चुके हैं ना। 4 5 5 Question 5, part 1, sin inverse x whole power c. Let y is equal to sin inverse x whole raised to the power 3. Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of y is equal to d upon dx of sin inverse x whole power 3. आपके दिमाग में आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पावर n, which is equal to n into function raised to the power n minus 1 into derivative of function. Sin inverse x का डेरिवेटिव क्या है? So it is equal to 3 multiplied by sin inverse minus x square. Next, Part 2, dot inverse of 2x divided by 1 minus x square. let y is equal to cot inverse 2x upon 1 minus x square. Differentiate both the sides with respect to x. We write d upon dx of y is equal to d upon dx of cot inverse of 2x upon 1 minus x square. फॉर्मूला बताओ। तो आदमी क्या समझने थोड़ी है, क्या करें आप इसे देख के फॉर्मूला में। यस, फॉर्मूला पूरा बता दो। माइनस 1 अपॉन कॉट इनवर्स को देख के आपके दिमाग में कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला नहीं आया बेटा, फिर तो कोई फरिश्ता ही आपके दिमाग में डाल सकता है। y प्राइम इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि x की जगह पे ये पूरी चीज दे रखी है, तो वी राइट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ function which is 2x divided by 1 minus x square। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लास्ट में आप एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अगर x के अलावा कोई फंक्शन दे रखा है तो आपको उसे डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहिए। नाउ इट इज इक्वल टू y प्राइम इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर upon 1 minus x square whole square multiplied by फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला नहीं आपने और इनमें क्या पढ़ते हैं वो आज दूसरी दफा है इंडस्ट्री सेशन आप थोड़ी सी तकरीर और कर लें तो बड़ा बुरा लगे।
थोड़ी सी गड़बड़ी इसी तरह और कर दिया गया, अभी हंसने की बात शुरू नहीं होगी, आपकी ऐसी गड़बड़ी हो जाएगी। तो उसका एग्जाम तो बेटा यही है। मैं फिर कहूँगा डिफरेंशिएशन जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो डे 1 से पहला लेक्चर पहला सवाल वो कर लीजिए। Two is constant taken outside, derivative of x upon 1 minus x square. इसे लिखा जा सकता है y prime is equal to -2 divided by 1 minus x square whole square plus 4x square divided by 1 minus x square whole square. ये 2 -1 से मल्टीप्लाई और -2 यहाँ हमने एलसीएम ले लिया। अब यूज करना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड। आप वही यूज करना, कांस्टेंट वही जब फैक्टर है, आप मगर फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन यूज करनी चाहिए। आपको लगेगा कि ये माइनर मिस्टेक है, मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट अभी तक पढ़ना शुरू ही नहीं कर सका। ये जो मैंने आपसे कहा था कि ये सवाल 5 से 8 10 दफा कीजिएगा, हर दफा फॉर्मूला लिखिएगा, आपने ओवर एस्टिमेट किया तो आप इस स्टेज पे जब आधी डिफरेंशिएशन खत्म हो गई, आप अभी भी कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो हैरान हो गई कि मुझे सवाल पूछ लो आप कांस्टेंट इंटीग्रेशन, यही चीज आगे आप कैरी करते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर into derivative of x minus x into derivative of 1 minus x square whole divided by 1 minus x square whole square। अब इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आएंगे और इसे सिंप्लीफाई कर दी, -2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर से कैंसिल होकर प्लस 2x स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी इसे सिंपली डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करें। टाइम मिल जाए तो कर लीजिएगा, बल्कि इसके बाद मैं लिख ही लेता हूँ, आपको कहाँ टाइम मिलेगा। जिस आदमी को 3 हफ्तों 4 हफ्तों में फॉर्मूले याद करने की तौफीक ना मिली, सम और डिफरेंस को रिवाइज करने की तौफीक ना मिली, उससे क्या एक्सपेक्ट। डिफरेंशिएशन में शुरू करते वक्त मैंने कहा था कि मोर देन 90% स्टूडेंट जाए कर देते, उन्हें एहसास भी नहीं होता। मेरे हिसाब से जो बच्चा इस स्टेज पे यहाँ पे मुझे कहेगा फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, मैं तो समझूंगा कि वो अभी तक जीरो है, और जो नहीं बोलेगा इसका मतलब वो तो खुद अपने आप से कह रहा है जी। ये हो गया -2 into 1 minus x square whole square divided by 1 plus x square whole square। अब बहुत सारे बच्चों के लिए खुद यही जवाबबाजी होगी कि पता नहीं क्या कर दिया, हालांकि ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये माइनस के होल स्क्वायर यूज करें, मिडिल टर्म आ जाएगी -2x स्क्वायर, ये लिखा हुआ है प्लस 4x स्क्वायर, -2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इट बिकम्स प्लस 2x स्क्वायर। तो यूज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर व्हिच मींस a प्लस b होल स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर ये स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें तो आप भी कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 1 minus x square into 1 minus x into -2x whole divided by 1 minus x square whole square। 1 minus x square whole square cancel, you left -2 divided by 1 plus x square whole square into 1 minus x square plus 2x square। It is -2 divided by 1 plus x square whole square into 1 plus x square। 1 plus x square cancel हो गया, -2 divided by 1 plus x square। It is the most simplified form।
यानी आप थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं कि यही सवाल हम लेके कहेंगे कि आप इसे इंटीग्रेट करें, आप इसे इंटीग्रेट करें और जाहिर सी बात है ये आंसर ये है। आप सीधा सीधा काम नहीं कर सकते तो उल्टा सीधा काम कैसे करें। सम और डिफरेंस में आपको मसला होता है, यानी इस सवाल में यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर कोई बच्चा कहता है फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, मेरे पास अब उसका इलाज ही नहीं। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर कोई बच्चा कहता है लॉग, इसका मतलब उसे लॉग के सवाल की जाए करें। अब तो काम को आसान करने के लिए तो इससे ज़्यादा आसान और क्या हो। आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद लॉग भी ले रहे हैं तो डायरेक्ट लॉग ले लेते। थोड़ा सा अपने हाल पे बेटा रहम कर लीजिए। कैलकुलस जो है उसको आपने